हेलो गाइज। तो आज केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है एंड जितने भी चैप्टर है 11-12 का हर चैप्टर का हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन करके उठाया है, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉलिड बोला है तो वाटर इसको रिमूव कर देते हैं, वो ये भी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्रास जो है ये ब्रास इज ए सॉलिड सोल्यूशन of zinc in copper, both are metals and ये दोनों फॉर्म करता है homogeneous alloy। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन। मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज तो ऑप्शन दिया हुआ है। तो मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन इसको अगर लिखे तो होगा मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution in liters। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच यूनिट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। कौन सा यूनिट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ऑप्शन दिया हुआ है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मास, परसेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोलारिटी। व्हिच यूनिट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोलारिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द solubility of gases in liquids। द solubility of gases in liquids increases with increase in temperature, increase in pressure, decrease in solute quantity। तो ऑप्शन इसको अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ गैस solubility in liquid increases with pressure। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द solubility of gases in liquid increases with increase in pressure। According to Henry's law, gas solubility in liquid increases with pressure। Next question is which law explains the relationship between pressure and solubility gas। तो पहले भी मिला है जो Henry's law, according to Henry's law gas solubility in liquid increases with pressure। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, Henry's law। Next question is Bpharm pressure। Bpharm pressure of a solution is lowered due to increase in temperature, addition of volatile solute, addition of non-volatile solute, increase in solute temperature। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, Bpharm pressure of a solution is lowered due to addition of non-volatile solute। Next question is an ideal solution obeys Raoult's law। An ideal solution obeys Raoult's law। ऑप्शन ए दिया हुआ है only at high temperature, only at low pressure, at low concentration and temperature, only when delta H mix not equal to 0। तो यह अगर देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, an ideal solution obeys Raoult's law at all concentration and temperatures। Next question is a solution shows negative deviation from Raoult's law if a solution shows negative deviation from Raoult's law if। तो इसको अगर लिखे ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0। ए सोल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन जो है ये इंडिकेट्स करता है स्ट्रॉन्गर इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन को, तो रिलीजिंग हीट एक्सोथर्मिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट देयर नेचर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन number of solute, volume of solute, number of solute particles, color of solute। तो elevation in boiling point depends on number of solute particles। Next question is which method is best to determine the molar mass of a polymer। तो यह अगर देखें तो ऑप्शन दिया हुआ है
elevation in boiling point, depression in freezing point. Option C is correct. Osmotic pressure. Osmotic pressure जो है it gives accurate values of large biomolecules and polymer. Next question is a solution. Solution contains 1 mole दिया हुआ है ग्लूकोज एंड 1 ग्राम वाटर दिया हुआ है. व्हाट इज मोलालिटी? तो मोलालिटी निकालने के लिए बोला है. तो मोलालिटी अगर निकाले तो मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट. मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 1 मोल डिवाइडेड बाई केजी ऑफ सॉल्वेंट. इसको अगर वैल्यू लिखे तो 1 kg. तो ये इसका आएगा 1 मोल पर केजी. ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 मोल पर केजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच colligative property is affected by electrolysis. Which colligative property is affected by electrolysis? तो पहले भी मिला है एक. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज abnormal molar mass is observed when. Abnormal molar mass is observed when strong acids are used, solute undergoes association or dissociation, solvent evaporates completely, temperature remains constant. तो ऑप्शन B is correct. Solute undergoes association or dissociation. Abnormal molar mass is observed when solute undergo association or dissociation. Next question is which Bentov factor I for NaCl in solution is approximately. The Bentov factor for NaCl in solution is approximately. तो NaCl जो दिया हुआ है इसको अगर डिसोसिएट करें तो होगा डिसोसिएट इंटू Na पॉजिटिव होगा एक एंड Cl नेगेटिव. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 2. ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सॉल्ट ब्रिज इन ए गैल्वेनिक सेल. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सॉल्ट ब्रिज इन ए गैल्वेनिक सेल. तो ऑप्शन दिया हुआ है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू कंप्लीट द सर्किट एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टू ऑक्सीडाइज द इलेक्ट्रोलाइट. ऑप्शन बी इज करेक्ट, to complete the circuit and maintain electrical neutrality. What is the function of a salt bridge in a galvanic cell? Is option B is correct, complete the circuit and maintain electrical neutrality. Next question is in a galvanic cell electrons flow from. तो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लो करता है एनोड टू कैथोड से. एनोड जो है ये ऑक्सीडेशन है एंड कैथोड जो है ये रिडक्शन है. तो ऑप्शन C is correct, anode to cathode. Next question is which of the following reactions occurs at the cathode in a galvanic cell. Which of the following reactions occurs at the cathode in a galvanic cell. तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीडेशन. तो पहले भी बोला है कैथोड जो है ये रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. which of the following reaction occurs at the cathode in galvanic cell. Option B is correct, reduction. Next question is a standard. The standard cell potential is positive when the cell is electrolytic, at equilibrium, spontaneous, non-spontaneous. Option C is correct. The standard cell potential is positive when the cell is spontaneous. So a standard cell potential is positive inert cell. इसका मतलब होता है the redox reaction is spontaneous. Standard cell potential जो है positive, B inert cell means होता है redox reaction is spontaneous. Next question is Nernst equation relates a voltage and temperature. तो Nernst equation जो है ये option C is correct, cell potential and concentration. Nernst equation shows how electrode potential जो है ये vary करता है with concentration. Next question is unit of conductivity का यूनिट बताना है तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट बताना है तो इसको अगर लिखे तो मोलार कंडक्टिविटी इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी. इसका अगर यूनिट लिखे तो आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Next question is the dilution. With dilution, the molar conductivity of a weak electrolyte
विथ डायल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज इंक्रीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विथ डायल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ अगर देखें तो विथ डायल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये आयोनाइज मोर अपॉन डायल्यूशन तो इंक्रीज होता है मोलर कंडक्टिविटी, तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मेटल इज यूज्ड इन द एनोड ऑफ ए ड्राई सेल, एनोड ऑफ ए ड्राई सेल ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट जिंक। तो जिंक जो है ये शार्प करता है एज ए एनोड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ड्राई सेल में कंटेनर इन ए ड्राई सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इलेक्ट्रोलाइट सेल के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन एनोड इज पॉजिटिव कैथोड इज नेगेटिव, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव एंड ये अट्रैक्ट आयनाइंस को अट्रैक्ट करता है एंड कैथोड इज नेगेटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट्स, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Mass of deposited is proportional to current. Faraday's first law of electrolysis states mass deposited is proportional to current into time. Next question is which of the following is a secondary cell, कौन सा secondary cell है ऑप्शन में से, तो ऑप्शन देखें अगर लेक्लेंसिस मर्क्यूरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लीड एसिड बैटरी, तो सेकेंडरी सेल जो होता है, सेकेंडरी सेल जो है ये रिचार्जेबल है एंड लीड एसिड इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द फ्यूल इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, तो यहाँ अगर ऑप्शन बी इज करेक्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूजेस H2 जो है ये एज अ फ्यूल एंड O2 जो है एज द ऑक्सीडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रस्टिंग ऑफ आयरन कौन से ऑप्शन में से कौन सा का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन गैल्वानिक कोरोशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वानिक कोरोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, HCl, NaOH, KOH, H2SO4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। aqueous KOH is commonly used as an electrolyte, so which electrolyte is used in hydrogen fuel cell, option A C is correct, KOH. Next question is which of the following statement is correct about galvanic and electrolytic cell, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गैल्वानिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के लिए करेक्ट है, तो ऑप्शन दिया हुआ है गैल्वानिक सेल्स रिक्वायर एक्सटर्नल करंट, electrolytic cells convert chemical energy to electrical energy and galvanic cells produce electricity through a spontaneous redox reaction, option D both involve non spontaneous process। तो यहाँ अगर देखें तो गैल्वानिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए ऑप्शन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, गैल्वानिक सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the rate of a chemical reaction is defined as, the rate of a chemical reaction is defined as change in concentration of a reactant or product per unit, option C is correct। the rate of a chemical reaction is defined as change in concentration of a reactant or product per unit time। next question दिया हुआ है which the rate of reaction is double, the rate of reaction doubles when the concentration of a reactant is double। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज ऑल्सो डबल, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, तो इसको अगर देखें तो ऑप्शन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसको अगर लेके रेट डी प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच unit of rate constant for a first order reaction, unit of rate reaction for a first order reaction, तो ऑप्शन दिया हुआ है
unit of rate constant for a first order reaction is S inverse. Option B is correct. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये रेट कांस्टेंट विद यूनिट्स ऑफ रेसिप्रोकल टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ऑप्शन दिया हुआ है प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल थ्री जो है ये इन्फ्लुएंस बाय affecting frequency and energy collision. Option A, B, C, D, all three are correct. Next question is half life of first order reaction is half life equal to 0.693 divided by K. तो hence independent of concentration. option देखें तो half life of a first order reaction is option C is correct, independent of concentration. Next question is the rate constant increases with. तो rate constant increases with. option D is correct, increases in temperature. Rate constant increases with increase in temperature. Next question is plot of natural logarithm of R E versus time is a straight line for. option दिया हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Next question is in the Arrhenius equation the slope of the line in natural logarithm of K versus 1 by T plot is equal to. ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन तो अकॉर्डिंग टू Arrhenius plot is natural logarithm of K equal to minus EA divided by RT plus NA. तो यहाँ अगर देखा तो ऑप्शन C is correct. In the Arrhenius equation the slope of the line in natural logarithm of K versus 1 by T plot is equal to minus तो minus EA divided by R. Next question is a reaction is zero order then a reaction is zero order when rate is independent of concentration, rate is directly proportional to concentration, rate decreases with concentration and concentration remains unchanged. और यहाँ अगर देखें तो रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर व्हेन. ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration. नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to collision theory effective collisions must have high pressure only, proper orientation and a sufficient proper energy, maximum concentration, equal molar mass. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू collision theory effective collision must have proper orientation and sufficient energy. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following elements is a D block element. कौन सा D block element का है. तो ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम, क्रोमियम, सीजियम, बेरियम. ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर आता है 24. तो ऑप्शन एंड ट्रांजिशन मेटल जो है ग्रुप 3 to 12 तक होता है. Which of the following elements is a double block element. Option B is correct, chromium. Next question is the outer electronic configuration of a D block element is. The general outer electronic configuration of D block element is. Option B is correct, n square n minus 1 divided by t to the power minus 10. Option B is correct. Next question is which of the following is a characteristic of a transition metal. Which of the following is a characteristic of a transition metal. तो ऑप्शन दिया हुआ है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कलरलेस आयन्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन मेटल बिहेवियर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following is a characteristic of a transition metal. Option C is correct, variable oxidation state. Next question is
Which of the following transition metal ion is colorless in aqueous solution? तो यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन जिंक इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिंक। तो Zn टू पॉजिटिव जो है ये कम्प्लीटली फिल करता है डी शेल को, डी सबशेल को, एंड कलरलेस बोला है। तो अगर Zn टू पॉजिटिव जो है ये कॉन्फ़िगरेशन फिल करता है डी सबशेल में, तो नो डी सिंगल बॉन्ड डी ट्रांजिशन, तो कलरलेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू, ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉल साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड प्रेजेंस ऑफ बैकेंट डी ऑर्बिटल्स, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑप्शन ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ऑप्शन बी सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which oxide of manganese is used in dry cell, ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, MnO2। which oxide of manganese is used in dry cell, MnO2। which of the following is not a property of transition metal, तो ट्रांजिशन मेटल जो है ये ऑक्सीडाइज करता है एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक को। तो यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, is not property of transition, तो formation of acidic oxides only। next question is oxidation state बताना है। class 2 state is most stable for, किसके लिए most stable है? तो इस यहाँ अगर देखें तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, Zn2 पॉजिटिव इज स्टेबल ड्यू टू जो Zn2 पॉजिटिव का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 3d10 है, कम्प्लीटली ये डी ऑर्बिटल जो है ये कम्प्लीटली फिल है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ब्लॉक, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को और क्या नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनर ट्रांजिशन मेटल। तो इनर ट्रांजिशन मेटल और बोल सकते हो लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, ये प्लेस किया जाता है एफ ब्लॉक के अंदर, तो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ तक रख देते हैं, बाद में और क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, मतलब हर चैप्टर का हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन करके उठाया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलते हैं।